Hi, my name is Adik, and since we've been discussing biscuits, I was also enjoying one today. And we've been discussing biscuits for, I guess, last 3 videos now. So today is a video that I want to tell you about. How do you create that differentiator that we spoke about? The differentiation between the biscuit that you create and the biscuit that your competitor creates. मुझे बहुत सारे सवाल आए, लोगों ने पूछा कि ये प्रोसेस साइपॉक ये सब समझ में आ गया, बट हमारा स्ट्रैटेजी जो आपने अज्यूम किया दैट उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, हाउ डू आई क्रिएट दैट डिफरेंशिएटर. Normally in a consulting environment we would say okay, you know what, you do research, right? But हम ऐसे नहीं हैं, रिसर्च के लिए हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने वाले. So therefore, what's the best way to go about figuring out what is that difference that is there in your service and the service of somebody else, your biscuit and the biscuit of your competitor? So the best way to do it is to involve your team. At times it is important that you roll your sleeves up, get your tie off, get your team together, and in a casual atmosphere start brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मतलब ये हुआ कि स्टार्ट गेटिंग आइडियाज फ्रॉम पीपल, इन्वॉल्व योर टीम टुगेदर टू क्रिएट दैट डिफरेंशिएटर. क्योंकि डिफरेंशिएटर खाली प्रोडक्ट में नहीं बनना है, डिफरेंशिएटर बनना है वो प्रोडक्ट को खरीदने का पूरे एक्सपीरियंस में, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंशिएशन को महसूस करना चाहिए. देयरफॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. There are a couple of interesting ways to do brainstorming which I'd like to tell you and talk about today. One of the things that you could do is get your team together, outline कि हमें क्या करना है. So you may say, okay, today I'm going to invite all of you to figure out हमारे बिस्किट में और दूसरे लोगों के बिस्किट में क्या डिफरेंस है. Okay, and I want you to tell me कि ये डिफरेंस है. You could also have another problem statement and say what kind of difference should there be in my biscuit and my competitor's biscuit. Okay. Then what you do, you give people chits. Okay, everybody should have one chit, and you should ask the person to write what he thinks on the chit. So assuming मैंने लिखा our biscuits need to be a little more crunchier because that's what my customers expect. और मैंने वो chit को पास किया मेरे बाजू में जो बैठा है उधर, और मेरे पास मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है उसने भी एक चिट पे लिखा एंड ही पास दैट चिट टू मी. उसके चिट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि माई बिस्किट नीड्स टू हैव मोर शेल्फ लाइफ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट के ओके मोर शेल्फ लाइफ. ओके, देन आई एम गोइंग टू बिल्ड अप ऑन दैट शेल्फ लाइफ एंड से ओके मे बी पैकेजिंग विल हेल्प अस गेट दिस मोर शेल्फ लाइफ. ओके, एंड देन आई पास दैट ऑन. क्या हो रहा है कि उसकी आइडिया जो है वो मेरे पास आ रही है, आई एम बिल्डिंग अप ऑन इट एंड देन आई एम पासिंग दैट बिल्ट अप आइडिया टू द नेक्स्ट पर्सन, ही इज बिल्डिंग अप ऑन इट एंड मेरा आइडिया भी वैसे ही पूरे सर्कल में घूम रहा है. व्हेन यू गो अराउंड डूइंग दिस देयर आर लेस ऑफ डिस्प्यूट्स कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तू जो बोल रहा हो गलत है. नो, ऑल ऑफ दोस थिंग्स गेट आउट ऑफ द वे. इट्स अ प्रीटी कैजुअल एटमॉस्फेयर, सो पीपल राइट देयर थॉट्स आउट एंड at the end of the day, once all the entire circle is done, you should then be able to read out all the chits and see कि कौन सा आइडिया जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं. आई थिंक that will work out to be the best brainstorming session that you can have. Second way of doing it, which is even more interesting and very engaging, is to have a whiteboard brainstorming session. By whiteboard brainstorming session, what I mean is आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एंड देन यू मेक पीपल से वर्ड्स दैट कम टू देयर माइंड. सो व्हाट कुड बी अ डिफरेंशिएटर इन माय बिस्किट एंड माय कॉम्पिटिटर्स बिस्किट? लेट पीपल राइट डाउन वर्ड्स. क्रंची can be a word, so just simply write crunchy. It must have nuts, so nuts. Best with milk, it should be made of milk या milk सिर्फ. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये just randomly whatever comes in your mind just write. When you think of a biscuit you think of morning, right? Morning. When you think of biscuit you think of breakfast, right? Breakfast. When you think of biscuits you see toppings, right? The word toppings. ये words लिखिए white board पे and then you go around the room in the same chit way that I mentioned you earlier
and ask people to construct their solutions based on the words given. So use those words and construct something that can become a differentiator. It sounds like a game, and you will get a possible differentiator out of it. This is the second way, in which you can do it. The third and a very effective way of doing it is stating the problem and then asking for solutions. So you should say that, okay, what if we want our biscuit to be exactly similar to our competitor's biscuit? There is no differentiator. And then you list down everything that comes in your mind that can make your biscuit exactly the same way your competitor's biscuit is. Once you have that list on, then you either do the chit or you do the board to figure out how all of these things which are similar can be different. So come up with a solution. Now when you do something like this, it is really amazing to see how people are able to come up with such innovative ideas and thoughts. That innovation and that thought will not only give you a differentiator, but they will really buy into your biscuit. So keep munching on your biscuits, if I can say that. Have a casual brainstorming session and make your biscuit the best in the town. Keep propelling.